Prabhuji, salah gimana? Putih di karun aku. Chapter 13 and 19, which home is number 9. I think this one. So, here, Parama Karuna Prabhuji Nitai Gaura Chandra. So the Lord Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu is so merciful to deliver the whole world. They are delivering the whole world by their causeless compassion and mercy, causeless mercy. Similarly, we have in Kanaya days, we have the two brothers. They are so much sacrificing for all of us, and they are helping us to progress in our devotional service. I submit my humble obeisances to these two brothers, His Grace Braj Prakash Prabhuji and Yasumati Nandan Prabhuji. So it is my great fortune and our great fortune. We have the opportunity to have association with these great personalities. And so many wonderful other devotees, they are helping these two brothers to spread Krishna consciousness in this Kanaya days. I submit myself to all these Vaishnavas. And in last week, I see how dedicated the devotees are serving in the mission of Srila Prabhupada. Every devotees are unique in their approaches. They are having different capacities to work, and they are. I would like to say they are always thinking about Krishna. How I have to devotees. They are very eager to capture the services. I cannot hide myself. How His Grace Vikram Prabhuji and Manoj Prabhuji, they are thinking how to serve Krishna. Wherever they are going, how to get service and how detailedly they are serving. I am humbly pray to all the assembled Vaishnavas. I should also get that kind of taste to serve little bit to Krishna. That what consciousness is. As once he opened the mouth, he talks something, immediately anybody can understand the person's mood and what is their level, either in material or in devotional service. When I'm interacting with these devotees, they are encouraging me, and also I'm just pray to the Lord that I should also have that kind of mood to serve. Service is the key of success. So I should also have the mood, and let us all pray, all of us, to have that mood of serving in Srila Prabhupada mission under the guidance of the senior devotees. So let us pray one time Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. So we will discuss today the text number 9. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tado Jaya Mudiraye Nasta Prayasu Abhadresu
नितं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कया वृत्त्या वर्तितं वा चराद्भिः शिधिमण्डलम् तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानि इह भूतले कया वृत्त्या वर्तितं वा चराद्भिः शिधिमण्डलम् तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानि इह भूतले कया वृत्त्या वर्तितं वा चराद्भिः शिथिमण्डलम् तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानि इह भूतले कया वृत्त्या वर्तितं वा कया वृत्त्या वर्तितं वा शरद्भिः शिथिमण्डलम् तानि क्षेत्रमुख्यानि शीतानि क्षेत्रमुख्यानि तानि भूतले सेवितानि इह भूतले कया वृत्त्या वर्तितं वा कया वृत्त्या वर्तितं वा क्षितिमण्डलम् शरद्भिः शिथिमण्डलम् तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानि इह भूतले कया वृत्त्या वर्तितं वा शरद्भिः शिथिमण्डलम् तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानि इह भूतले कया वृत्त्या वर्तितं वा शरद्भिः शिथिमण्डलम् तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानि इह भूतले कया वृत्त्या वर्तितं वा शिथिमण्डलम् तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानि इह भूतले कया वृत्त्या वर्तितं वा शरद्भिः शिथिमण्डलम् तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानि इह भूतले कया वृत्त्या वर्तितं वा शरद्भिः शिथिमण्डलम् तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानि इह भूतले। माताजी कया वृत्त्या वर्तितं वा शरद्भिः शिथिमण्डलम् सेवितानि इह भूतले word to word meaning
Kaya, by which. Vritya means. Vartidam, maintained your livelihood. maintaining your livelihood. Yes, maintained your livelihood. Okay. Vah, your good self. Sharadbihi, by traveling. Shiti Mandalam, on the surface of the earth. Tirthani, places of pilgrimage. Kshetra Mukhyani, the principal holy places. Sevitani, served by you. Iha, in this world. Bhutale, on this planet. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Translation. While traveling on the surface of the earth, how did you maintain your livelihood? At which holy places and pilgrimage sites did you render service? Purport. Vidura went out from the palace to detach himself from household affairs, especially political intrigues. As referred to herein before, he was practically insulted by Duryodhana's calling him a son of Sudrani. Although it was not out of place to talk loosely in the case of one's grandmother. Vidura's mother, although a Sudrani, was the grandmother of Duryodhana, and funny talks are sometimes allowed between grandmother and grandchildren. But because the remark was an actual fact, it was unpalatable talk to Vidura, and it was accepted as a direct insult. He therefore decided to quit his paternal house and prepare for the renounced order of life. This preparatory stage is called Vanaprastha Ashram, or retired life for traveling and visiting the holy places on the surface of the earth. In the holy places of India like Vrindavana, Haridwar, Jagannath Puri and Prayaga, there are many great devotees, and there are still free kitchen houses for persons who desire to advance spiritually. Maharaja Yudhishthira was inquisitive to learn whether Vidura maintained himself by the mercy of the free kitchen houses, Chatras. Hare Krishna. हिंदी में अनुवाद होता है अनुवाद। पृथ्वी पर विचरण करते हुए आपने अपनी जीविका कैसे चलाई? आपने किन किन पवित्र स्थलों तथा तीर्थ स्थानों पर सेवा की? तात्पर्य, विदुर राजमहल से बाहर इसलिए चले गए थे क्योंकि वे अपने को घरेलू मामलों से, विशेष रूप से राजनीतिक षड्यंत्रों से विलग करना चाह रहे थे। जैसा कि इसके पूर्व उल्लेख किया जा चुका है, दुर्योधन ने शूद्राणी पुत्र कहकर उनका एक तरह से अपमान कर चुका था। यद्यपि किसी को पिता नहीं, दादी के विषय में अनाप शनाप बातें करना कोई नई बात नहीं है। विदुर की माता शूद्राणी होते हुए भी दुर्योधन की दादी लगती थी, और कभी कभी दादी तथा नातियों के बीच ऐसा परिहास करता है क्योंकि यह छीना कसी एक वास्तविकता थी। अतः विदुर को बुरी लगने वाली थी, फलतः इसे प्रत्यक्ष अपमान के रूप में ग्रहण किया गया। फलस्वरूप विदुर ने तय किया कि वे अपना पैतृक महल त्याग कर विरक्त जीवन बिताने की तैयारी करेंगे। यह तैयारी की अवस्था वानप्रस्थ आश्रम कहलाती है, अर्थात ऐसा विरक्त जीवन जिसमें पृथ्वी भर में विचरण करके तीर्थ स्थलों का दर्शन किया जाता है। भारत में वृंदावन, हरिद्वार, जगन्नाथपुरी तथा प्रयाग ऐसे तीर्थ स्थलों में अनेक महान भक्त हैं, और जो लोग आध्यात्मिक उन्नति करने के इच्छुक हैं उनके लिए वे मुक्त अन्न क्षेत्र लंगर चलाए जाते हैं। महाराज युधिष्ठिर यह जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या विदुर अपना जीवन निर्वाह ऐसे अन्न क्षेत्रों सत्र से कर रहे थे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
Swayam Rupa Kadamayyam Tatati Swapadantiham Vandeham Sri Gurum Sri Yuta Pada Kamalam Sri Gurum Vaisnavam Cha Sri Rupam Sakra Jatan Sagagana Raghunathan Vidam Tam Sajivam Satvaidam Savadutam Parijana Sagitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagagana Lalita Sri Visahan Vidam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpadarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Paditanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesa Sunyavadi Pashyata Desa Tarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Shivasadi Gauravakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Kaya Vritya Vartidam Vas Charadbihi Shiti Mandalam Tirthani Kshetra Mukyani Sevitani Ihabhutale. Translation: while traveling on the surface of the earth, how did you maintain your livelihood? At which holy places and pilgrimage sites did you render service? So, here we see in this chapter how Pandavas and his associates received Mahatma Vidura from his pilgrimage sites and how they served him, offering nice foodstuffs, then allow him to take some good rest. After that, Maharaja Yudhishthira is inquiring about this sloka, is inquiring about him. How did you maintain your livelihood? Because Mahatma Vidura went for a pilgrimage. Then after returning, he is asking, how do you maintain your livelihood during your pilgrimage time, and in which holy places, sites you render service? This is the question of Maharaj Yudhishthira. आज के श्लोक में हम सब श्रवण कर रहे हैं प्रकार से पांडवों ने हमारे विदुर का स्वागत किया कि वापस विद्याधर से वापस आने की श्लोक में हमने देखा किस प्रकार से उन्होंने उनको शांत करने का अवसर दिया और शांत करने पहले उनको अच्छे से उनका स्वागत करते हुए उनको घूमने पड़ करके शांत करने के पश्चात अब जब उनके साथ बैठे हैं महात्मा दूर से महाराज श्री कृष्ण पूछना है कि आपने कभी आप यात्रा पे गए थे तो आप यहाँ से वृषि चले गए थे आप राज्य से कितने स्थानों पर जाने के लिए आपने अपनी चिंता कैसे चलाई आपके पास कहाँ से प्राप्त हुआ कैसे आपने चलाई और किन किन स्थानों पर जाकर के आपने सेवाएं की तभी हमें आप विस्तार से हमसे बताइए तो उनसे वो जिज्ञासा कर रहे हैं. So this discussions, if some, it is happening everywhere. Sometimes our friends or relatives or family members went outside or coming back after certain duration of that time. This discussion starts, where you met and where you went there, how do you associate there, all this they will discussion. So normally, according to their varnas and their consciousness, the discussion will takes place.
तो ये इस प्रकार की वार्तालाप में बहुत स्वाभाविक है। कोई भी अपने घर से जब कोई बंधु बाहर जाते हैं, दस लोग आने के पश्चात पूछते हैं कि कहाँ गए थे आप, कैसे आप गए वहाँ पर। तो उन्हें कह रहे हैं कि ये अलग अलग वर्ण और आश्रम उनकी चेतना, विकसित चेतना के ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार के जिज्ञासा। The persons with consciousness in the level of Sudra, generally they will discuss about the things. So the place you visited, how we can have this enjoy our senses. Like they generally talk about their woman and wine and these kind of activities they are discussing about themselves. तो अगर शूद्र होंगे तो उनकी जिज्ञासा क्या होगी, किस प्रकार से आप वहां पर गए थे, कैसे और भोग के क्या साधन थे। वो भोग का विचार भोग रहे हैं, परिस्थितियों के बारे में, भोग के विषय के बारे में वहां पर क्या देखा आपने, क्योंकि यही इच्छा है। मतलब इस प्रकार की जिज्ञासा होगी, उससे मालूम हो जाएगा कि उनकी चेतना शुद्ध होनी चाहिए। The business mercantile kind of people, Vaishyas, consciousness, when they discuss, they will discuss about is how is the opportunity to do something, we can make money. Is the rice is not available in Kuwait, how will bring the rice, how to make money. And they will try to explore the opportunity to do business and then make money. This is the mentality of the Vaishyas. अगर वैश्य मिलेंगे आपस में, कोई वैश्य रहा है नाम से नहीं से भी, तो उसे ही पूछेंगे कि कैसे वहां पर व्यापार कैसा हो सकता है, यहाँ पर ये चीज में वहां पर क्या चीज मिलती है, इतना पूरा ध्यान व्यापार हो रहा है। इस प्रकार से ज्ञान ज्यादा की उत्तर जो बोल रहे हैं वो वैश्य मान के। So if Kshatriyas consciousness, people in the Kshatriyas consciousness, they discussed about their political views, so we went there, that place is there, who is the king and who is ruling there, is there any loophole, we can conquer those areas, and their thoughts is in this way they will discuss. और अगर क्षत्रिय वर्ण के हैं तो वहाँ के राजनीतिक सुरक्षा इस प्रकार की व्यवस्था जो होगी उसके बारे में, वो शासन के बारे में, इस बारे में जिज्ञासा करके चर्चा करेंगे। So the Brahmana class of people, when their discussion will be in the mode of goodness, they will ask how they are following this Vedic culture in that particular place, how they are people's morality, whether they are following these moral instructions of the Shastras, and this way, how the method of worship they are following, these kind of discussions will be happen. A person in the conscious of Brahmana, their discussion will go in this direction. अगर ब्राह्मण वर्ण के होंगे तो उनकी जिज्ञासा क्या होगी, ये मिलेंगे आपस में आए हैं किस प्रकार से वहां पर वस्त्र हैं कि वहां पर नैतिकता का पालन किस प्रकार से हो रहा है, शास्त्र शिक्षा इत्यादि उसका किस प्रकार से वहां पर हमारे दृष्टिकोण देखने को मिलता है। तो उनका जो सदगुण है तो उनकी जो जिज्ञासा होगी वो उसी स्तर। So above all, if the Vaishnavas met and their discussion will be in a transcendental platform, they see how to serve the Supreme Personality of Godhead and how to serve the Vaishnavas, and their discussion will be the transcendental one. और इसके ऊपर अगर वैष्णव होंगे या वो मिलेंगे, उनकी चर्चा जो होगी वो दिव्य स्तर और इन सभी से परे उनका यही बस ध्यान होगा कि इस प्रकार से भगवान की सेवा।
आप लोग का भाव कैसा है, आपके बाप ने कैसे सेवा की, उनका ये प्रश्न, ये प्रश्न आती है। So Yudhishthira Maharaj, after conducting the formalities, how to welcome, and then he is asking about how did you maintain during your yatra, and then immediately he is asking, what service you rendered, and in what are all the in tirthas you are rendered service. This is the quality of a Vaishnava. कितना सुंदर बात बता रहे हो, बहुत अच्छी बात है। सुनने में हम लोग पढ़ रहे थे, बहुत सारा सच हो रही बात। महाराज युधिष्ठिर जो है तुरंत उनको स्वागत करके, उनको दादा की व्यवस्था करके, विश्राम करा के उनका प्रश्न है कैसे आप वहां पर रहे, विशेष रूप से बताइए क्या क्या सेवा की, जिन स्थानों पर आप गए क्या क्या सेवा, ये वैष्णव। So Vaishnavas, they know how to utilize everything in the service of Lord Sri Krishna. वैष्णव जानते हैं कि कैसे सभी उनके पास में जो भी चीज उपलब्ध है, मानस देह गेह, कैसे उसको भगवान की सेवा में। So one time Srila Prabhupada is giving his lecture to the audience. The mic is not standing. Like just now, our Sunil Krishna Prabhu adjusted the mic and he's lifting and other things. Same way, Prabhupada is trying speaking. This mic is not standing properly. It is tilting here. This thing, and Prabhupada is trying adjusting all these things, but still it is not stable. कोई वर्षित गोपाल जी वचन कर रहे थे, उनका जो माइक था वो ठीक से बैठ नहीं रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर कोई आगे लगाया वहाँ पर बस स्टैंड पर ठीक से नहीं बैठा था, बार-बार प्रयास करते थे ठीक से बैठ नहीं पाया। So Prabhupada said, the person sits opposite to Prabhupada, remove your Brahmana thread and tie this mic so that it will not, slip. Do that. Brahmana thread. गोपाल जी के सामने कोई भक्त बैठे हुए थे, ब्राह्मण जी भक्त थे, और अपना जनेऊ निकालो और जनेऊ से बांध दो, क्योंकि धीरे चलेगा नहीं। This thing, if you see, the Brahmanas, they will not accept this kind of activities because this Brahmana thread is sacred. How we can use this Brahmana thread to tie the mic? The Brahmana cannot able to imagine this thing. But whereas Vaishnavas, they can do this. We see from the life. ये देखिए ब्राह्मणों में बहुत लोग सात ब्राह्मण की बात, उनके लिए बोलते कि आपको घेरे को निकालना है, मतलब इस प्रकार से बिल्कुल स्मार्ट, इसमें बड़ी गवाह होता है। लेकिन यहाँ पर वैष्णव जो होते हैं वो समझते हैं कि हर चीज भगवान की सेवा की आवश्यकता पड़े, भगवान की सेवा करना सर्वोपरि है, लड़के अपने धर्म का पालन करना उसमें नहीं। इसमें भगवान का भजन चल रहा है, इसमें कोई बाधा आ रही है, जरूर करना पड़ेगा। But this example, we should not try to imitate Prabhupada because Prabhupada is on that level, he can do that, but our level, we should never imagine these things to be done like that. यहाँ पर देखें माइक ऊपर से तो निकाला और हाथ कर गया, नहीं करना है, तो अभी क्या ये भी ठीक है, कुछ और व्यवस्था आ गई है। तो पांच विश्व भक्त है, कर सकते, वाले कहते हैं कि मैं वृद्ध हूँ, एक वृद्ध और एक बालक कुछ कर सकता है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, आपने निकल कर करना है। So one time, Srila Prabhupada, like when Mataji is cooking bhoga for Lord Krishna, some sweets, and then she's cooking. Prabhupada went into the kitchen and asking, what you are doing? Prabhupada, I am preparing some nice payasam for Lord Krishna, she told like that. Then Prabhupada put his finger and tasted it. Then the Mataji said, Prabhupada, this is still not offered. No problem, you offer to Krishna. एक बार भगवान के किचन में गए, माता जी सेवा कर रही थी, भगवान पूछा क्या बना रही है, पार्षद की बात, बोला मैं पायसम बना रही हूँ भगवान के लिए। भगवान ने हाथ डाल करके उसको
चल लिया। तो ना कि प्रभा जी ने हमारे को अधिक नहीं किया है, पर क्या कोई बात नहीं, अभी अधिक कर दूंगा, कोई बात नहीं। Then Prabhupada said, "You don't do that." बोला कि आप ऐसा मत करना, Because Prabhupada consciousness, Prabhupada is the friend of Krishna. Like in Vrindavan Leela, we see that how friends of Krishna, like how they are treating. They are eating in the same plate, and then they are even sometimes they beat Krishna. These Leelas are going on. So this we cannot imitate. ऋषि प्रभुपाद होते हैं शुद्ध भक्त हैं जो भगवान के साके भाव के हुक्म के निर्माणी हैं, और इससे देखते हैं कि वृंदावन में भगवान के साके भाव के भक्त हैं, वो लोग भगवान के साथ में कोई अंतर नहीं समझते। भगवान पर जो क्या खाते हैं, नंबर के मुख से छाछ डाल के उनका खा के साथ में खाते हैं, तो ये उनका स्तर है, ये हम लोग से निकल नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या बताया जा रहा है, वैष्णव का अस्तित्व इतना ऊपर फिर स्तर पर कार्य करते हैं। वो इस जो वर्णाश्रम विभाग है इसके ऊपर जाकर के वो स्वाभाविक प्रेम होता है, स्वाभाविक प्रेम होता है, विधि के बाहर होता है। वो निकल नहीं करना है। So we are the followers of Srila Prabhupada, not imitators of Srila Prabhupada. We have to follow the instructions of Srila Prabhupada and what is the essence of Prabhupada and senior Vaishnavas. तो ये हमारे अनुकरणीय नहीं है, अनुसरणीय प्रपात के जो बाकी है निर्देश है उनका पालन करना चाहिए। तो हमको विधि दिए हैं, निषेध दिए हैं, हम सबको साधना भक्ति में उनका पालन करना चाहिए। All this interaction, Srila Prabhupada is emphasizing that how important is to serve Lord Krishna. So he's emphasizing all these things. So our mood should be how to serve sincerely and seriously to Krishna by following the authorities. ये हमारा भाव है कि कैसे हम लोग भगवान को पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण की लोक सेवा करना पसंद करते हैं, ऐसा है अंदर विलास दास। So here Prabhupada purport, Vidura went out from the palace to detach himself from household affairs, especially political intrigues. As referred to herein before, he was practically insulted by Duryodhanas, calling him a son of Sudrani, although it was not out of place to talk loosely in the case of one's grandmother. So Prabhupada here is saying that how Duryodhana is insulted Mahatma Vidura. Duryodhana's Maharaja Vidura, Mahatma Vidura is the uncle for Duryodhanas. So he insulted him. Because of that, Vidura went to pilgrimage and coming back. So who is Vidura actually? Who is Mahatma Vidura? Mahatma Vidura is in previous janma, not previous janma, previously he is the Yamaraj. Yamaraj is the one of the 12 Mahajanas, doing service of the difficult service of the Lord, to take care of all the miscreants and do that. It's a very difficult service. Yamaraja is, in one incident, is cursed by the Manduka Muni. Then he took birth as a Mahatma Vidura. That Manduka Muni is cursed him. That story we can discuss. पहले वाले वृत्तांत हमारे को पाने वाले थे, विदुर कौन है? विदुर जो है वो यमराज है। यमराज को मंडूक मुनि के द्वारा श्राप दिया गया था, उसके बारे में बताया गया था, हमारे स्मरण किया था। कौन है वो? 12 महाजन में से एक महाजन है, 12 महाजन है, सबसे महाजन भगवान कृष्ण और वो बहुत कठिन सेवा कर रहा है। मैंने देखी भगवान के आदेश अनुसार जितने भी ऐसे पतित लोग हैं, पापी लोग हैं, कर लेना कोई बहुत अच्छा को सम्मान इस प्रकार से नहीं करना, और आपको बहुत कुछ
कहता है कि मैं दंड दे रहा हूँ, अच्छी कर रहा हूँ, लेकिन भगवान क्या कैसे सेवा कर रहे हैं, स्वागत भी करते हैं, लेकिन वो सेवा करते जा रहे हैं जिसमें कोई धन्यवाद नहीं मिलता। और कौन है वो? भगवान के शुद्ध भक्त जो भगवान के नाम की महिमा करते हैं, उनको मंडूक ने शाप दिया, तो अब वो महात्मा नंद के रूप में आए। So this story, Manduka Muni actually is in the meditation, and some of the in his hermitage, some of the thieves, they just stealing something, and to get away from the police, they just take the enter into this Manduka Muni ashram and then hide themselves. Then the police came and they found that the thieves are inside. They thought Manduka Muni is giving shelter to them. So they arrested everyone, and then the magistrate gives, I'm giving very shortly, giving that, give them a punishment for Manduka Muni, that, in a death punishment, to kill with the lances. So the king came to know that, he understands, the kings or Raja Rishis, they understand that, punishing Muni is very abominable things we should not do. At least we will, release him. In that way, he released Manduka Muni and begged for his pardon of his forces. So then Manduka Muni is a very knowledgeable person. He is thinking that I am a Rishi, I didn't do anything wrong in my entire life. Why this punishment is come to me? I just want to know. So the in charge is the Yamaraj, is giving this punishment. So I will go to ask Yamaraj. Those days, like how Narad Muni is traveling all the 3 planetary system, they have the power to travel wherever they want to go. This Manduka Muni went to Yamaraj court and asked, why you are giving me this punishment? I did not do any wrong to any living beings. So why you give the punishment to me? Then Yamaraj is narrating the story. When the Muni was in a very small age, tender age, he killed one ant by the straw. He pierced the straw into the ant and then killed. For that reaction, you have to suffer. Because of that, you are suffering this tribulations. Then Manduka Muni got very angry and said, see, when I was small child, I don't have the proper consciousness. How can a child can be punished for this insignificant mistakes? So like that he say, and then he cursed Yamaraj. Because of you give this injustice wrongly, you become a Sudra. Like that, in the next life, like that he punished. तो ये जो मंडूक मुनि थे, बड़े आश्रम में ये तपस्या कर रहे थे, वहां में थे। उसी समय कोई चोर जो है वो राजा को लेकर के आकर के आश्रम में जाने शुरू किया। ध्यान निकाल ध्यान देते मंडूक देखने पाए। जब उनके सिपाही आए, राजा के सिपाही आए, उन्होंने पूछा कि कोई आया है यहाँ पर? तो गुस्सा है, उन्होंने कहा मेरे नहीं, कोई नहीं आया। और बाद में उन्होंने सब चोरों को पकड़ा, उन्होंने घर से तो लगा कि उन्होंने चोर को पनाह दी थी, और इसलिए जो है उन्होंने छुपाया हमसे। राजा बताया, राजा बताया तो वहां पर जा सकते कृष्ण को उठाया उनको। तो यहाँ के जो गुरु राज में कहा वहां से छोड़ दिया, लेकिन मंडल ने सोच रहे थे कि मैंने समस्या की है, तो कहा था दंड मुझे क्यों दिया, थोड़े समय क्यों दिया। एक मेरी आवाज पूछा, विवाद में मिलने वाले पूछा, विवाद के पास है उसमें सब लोग कार्य प्रभुजी इस प्रकार से दान जहाँ भी यहाँ के लोग में भ्रमण करते थे, इस प्रकार से इनको भी सिद्धि के बल पर वहां पर चले गए। पूछा राज को बनाओ, क्या ऐसा कहता है मुझे दंड मिला क्यों नहीं। तो उनका वही खाता देखा, उन्होंने बताया कि देखिए आप बचपन में खेलते खेलते आपने एक उनके से जिंदा लेकर के और आपने एक चींटी के ऐसे उनको गोल करके चुहा करके उसे मार दिया। उसकी वजह से आपको ये प्रश्न ये क्या बात है?
छोटे से बालक को कुछ पता नहीं होता, उसकी चेतना विकसित नहीं होती है, और उसके इस कष्ट, उसके उस कर्म की वजह से आप उसको ये परिणाम दिया, बच्चे की उचित नहीं, आपको ठीक से न्याय करना नहीं आता है, आपकी बुद्धि शुद्ध की वजह से न्याय करना एक ब्राह्मण का कर्तव्य होता है, आप शुद्ध कैसे बुद्धि वाले को आपको समझ नहीं आया, इसलिए आप उसमें शाप देता हूँ, अपने तब की वजह बोला कि आप शुद्ध बने, तो वही शुद्धाणी के रूप में गाड़ी से जब निकलती High Court and then Supreme Court, and then they will plea for the president. All this happening nowadays for the against the judgment, whereas the few devotees of the Lord knows that what is behind in this. They are aware that one. When in the case of Parikshit Maharaj, he can challenge the curse and then he can rectify. He didn't do that. This is the will of the Lord. The Lord has some plan. So he accepted. Similarly, Yamaraj also didn't challenge anything. He accepted this one. Then this Maharaja, the Mahatma Vidura, gave a wonderful niti for all of us. तो अब अभी के समय में ऐसा कुछ होता है, किसी के साथ न्याय हो जाता है, लोग जाते हैं कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे देखिए तो फिर राष्ट्रपति के पास दरखास्त देते हैं, भाई मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, न्याय दिया जाए। फिर उस समय में भी भक्त होते थे, सहनशील हुआ करते थे। इनसे परीक्षित महाराज को जब शाप दिया गया कि आप साथ में कुछ उसका प्रतिक्रिया नहीं, वो भगवान की इच्छा समझ करके भगवान कुछ फिर की वजह इसमें होगा, भगवान की योजना है, जो आप स्वीकार करें। उसी प्रकार से यहाँ पर यमराज जी ने जो शाप दिया, जब कोई उसमें कोई नहीं की, तो न्याय जो प्रकृति का नियम है उसके हिसाब से न्याय किया, और लेकिन उन्होंने शाप को भी बड़े आसानी से सह लिया। और So here Prabhupada writes further, Vidura's mother, although a Sudrani, was the grandmother of Duryodhana, and funny talks are sometimes allowed between grandmother and grandchildren. But because the remark was an actual fact, it was unpalatable talk to Vidura, and it was accepted as a direct insult. So Prabhupada is saying that these grandchildren and grandmother can have the loose talks. Generally, they have the play talks. Sometimes it is allowed to, like for while playing, they can talk little extra, some loosely. This is allowed. But whereas here the talk is a fact, actually fact, because the mother of Vidura is a Sudrani, so the grandchildren is talking about the fact, it is unpalatable. So from this we can also take a lesson, a great lesson from them. So sometimes we devotees, friends, we have the associates, we will joking with the devotees, like to pull on another legs. In this way we are doing some discussion, but we should not do with the actual fact. Some fact is there, that point we should not point out. If you point out, maybe outwardly that devotees will laugh, but it will hurt. That's what Prabhupada is mentioned here. Since it is an actual fact, it is unpalatable. Even though it is a truth, it is a fact. So this cannot be, this way we cannot have the talk between others, one another. यहाँ पर बताया गया कि तुम्हारे दुर्धन ने उनको शुद्धाणी के लिए पुकारा था, शुद्धाणी का मतलब बोल रहे थे उनकी माता जी, उनकी दादी रखी। तो कहते हैं कि जब भी किसी का अपने दादी के साथ में ऐसे हास्य प्रयास करना, इसमें कोई त्रुटि नहीं। दुर्योधन की माता शुद्धाणी होती है, दुर्योधन दादी रखती थी, और कभी कभी दादी और नातियों के बीच में ऐसा मजाक होता रहता है। लेकिन ये शिका कैसे होती है, एक वास्तविकता उन्होंने जानबूझ के और उनको जिताने के बोला था, इसीलिए विदुर को ये भूलने वाली बात थी, और इसी के लिए इसको अपमान के रूप में ग्रहण किया गया। इस प्रकार से विदुर के विष्णु की कभी ऐसा हास्य प्रयास होता रहता है कि किसी वास्तविकता के ऊपर हमें हास्य प्रयास सत्य बात हो, उसके ऊपर हास्य प्रयास करना वो अच्छी बात नहीं है। उससे उसका क्या आपके साथ में हंसे, लेकिन उनके वो उनके हृदय को बात कर सकती है।
और किसी के तो उस प्रकार से दुखाना। So Prabhupada further writes, he therefore decided to quit his paternal house and prepare for the renounced order of life. This preparatory stage is called Vanaprastha Ashram, or retired life for traveling and visiting the holy places on the surface of the earth. So, in every one of us life, we should also take this kind of things. We have to, at least internally, we have to renounce the things. So Mahatma Vidura took this as a chance to take a Vanaprastha life. So he left all the comforts in the palace, and then he left for the pilgrimage. So we always hear from His Grace Brajprakash Prabhuji that we should have certain portion of our life, 10 to 15 years, for complete absorption of devotional service. So the same way, the Mahatma Vidura is also, find out this is the right time to live and to meditate on the Supreme Personality of Godhead. So he visited the pilgrimage and he met Maitreya Rishi, he met Uddhava. In this way, he attained the perfection. अभी गोपाल जी कहते हैं कि इस प्रकाश में क्या किया, फिर उन्होंने फलस्वरूप इस महल को त्याग दिया, पैतृक महल को, और व्रत जीवन में जाने की तैयारी करेंगे। गोपाल जी कहते हैं कि इस तैयारी की अवस्था को वानप्रस्थ आश्रम कहा जाता है। अर्थात ऐसा व्रत जीवन जिसमें पृथ्वी भर में विचरण करके तीर्थस्थलों का दर्शन किया जाए, और वो कह रहे हैं कि हम सब के लिए आवश्यक है। गोपाल जी कहते हैं इसी स्मरण के अध्याय में श्लोक हर एक गृहस्थ को चाहिए कि कम से कम अपना जीवन इस प्रकार से सुदृढ़ करे कि कम से कम 15 से 20 वर्ष पूर्ण रूप से भगवान की चिंता करें, जीवन सबको अपना प्राण करना चाहिए। तो इसी बात में यहाँ पर बात का सहारा तैयारी करेंगे पूर्ण रूप से निवृत्त हो जाए सब चीजों से, अपनी चेतना को भगवान संसार में जात बना रखा है, उसको समझने का समय है, समझने की तैयारी करना चाहिए। So in the holy places of India, like Vrindavana, Haridwar, Jagannath Puri and Prayaga, there are many great devotees, and there are still free kitchen houses for persons who desire to advance spiritually. Maharaja Yudhishthira was inquisitive to learn whether Vidura maintained himself by the mercy of the free kitchen houses, Chatras. So we practically see, because basically we are all from India, we see in the holy dhams, still the Chatras are available. Chatras means any pilgrimage can go there and take some free meal from there, and then they can do their devotional services, they can meet the sadhus. In this way, Maharaja Yudhishthira is asking Vidura that whether mostly these kind of chatras are maintained by the government. As Yudhishthira is the king, is asking that whether these chatras are functioning properly, or whether you have take the shelter of those chatras. In this way, Maharaja Yudhishthira is inquired about Vidura. इस प्रकार से जो महाराष्ट्र में तो जानते हैं कि जो स्थान है, बताया गया वृंदावन, ऐसे स्थानों पर कई जगहों पर लोग वो अनुदान करते हैं, उनकी सेवा होती है। जैसे कि अध्याय देखिए मंदिर खुला था, तो अंतरराष्ट्रीय हमारा मिशन की ओर से सबको मुफ्त में निःशुल्क 40 दिनों तक सबको 10,000 लोगों को रोज दिया जाता है। तो ऐसी कई स्थानों पर सेवा होती है। बद्रीनाथ में तो वहां पर बद्रीनाथ ऐसे निःशुल्क प्रसाद है, और जितने लोग आते नहीं फिर सेवा करते थे। तो बोले कि इसी प्रकार से वहां पर जाकर के यात्रा में पूरा समय भगवान की सेवा करना
प्रसाद के बारे में कोई चिंतन नहीं करना, नहीं तो प्रसाद मिल जाएगा पा लेंगे, पूरा समय वो इस प्रकार से भगवान के बारे में कोई चिंता नहीं करना है। और आज ये भी पूछा जाता है कि जो उनके राज्य में इस तरह से निर्वाह किया जा रहा है, ऐसे लोगों का क्या आपने वहां पर पाया, उस ऐसे छत्र में जाकर के आपने पाया, वो भी बोल के ऐसा कर रहे थे कि आपको वहां क्योंकि आप शाला है उनके राज्य में की। So, throughout the life of Mahatma Vidura, he struggled so much to teach the good things to his brother Dhritarashtra. Actually, Mahatma Vidura is so much attached to his elder brother. Elder brother Dhritarashtra is the elder brother of Vidurji. So he gives all good advice to Dhritarashtra from the beginning. But Dhritarashtra is not, he's actually outwardly is blind and internally is also a blind person. He cannot able to accept the good advice of Vidura because Dhritarashtra is blinded by the attachment towards his miscreant son Duryodhana. तो शुरुआत आरंभ के दिनों से ही महात्मा बुद्ध थे, वो धृतराष्ट्र से उनकी अर्थ के लिए वो वास्तविक जीवन का उद्देश्य था। सदैव उनको अच्छी सलाह दिया करते, वो राजनीति करते, अगर उनकी सलाह को माने नहीं हो कि धृतराष्ट्र को बाहर से भी अंधे थे और अंदर से भी आध्यात्मिक जगह भी अंधे हो गए, मोह में, पुत्र के मोह। और बार बार महात्मा बुद्ध को ये बताते थे कि आप ठीक नहीं कर रहे, उचित नहीं कर रहे, वो कर रहे। और अभी भी आए हैं जी, उन्हीं सबको इतना वो उनके बारे में विचार कर रहे हैं, कैसे उनका उद्धार करें, कैसे उनके वास्तविक अर्थ के बारे में बताएं। इसी वापस अभी आए हैं उन्हीं को उद्धार के अध्याय का नाम ही है धृतराष्ट्र द्वारा ग्रह का त्याग करना। तो वो ग्रह का त्याग करके वापस जाने की कोशिश करने के लिए आए हैं। So Vidura, Dhritarashtra, Sanjaya and Romakrishna Sutta all are studied under the Vyasadeva. Vyasadeva is the great spiritual master. Is the spiritual master. He is the father of Sukadeva Goswami, and they are all getting guidance from the Vyasadeva, but still Dhritarashtra is not perfected his life, and Romakrishna Sutta is also not get the proper teaching. Means that how glorious your spiritual master, if the disciple is not in the right attitude and the right mood, there is no chance of getting liberated and get their life perfection. तो धृतराष्ट्र, रोमहर्षण, सूत, ये लोग भी इनके अन्य लोगों के साथ में सुखदेव गोस्वामी इत्यादि इन लोगों ने व्यासदेव से ज्ञान ग्रहण किया है और इनको भी व्यासदेव से ज्ञान संजय बुद्ध से। लेकिन विशेष रूप से रोमहर्षण, सूत और धृतराष्ट्र इन्होंने उस ज्ञान का अनुवाद करने की जरूरत नहीं है। तो ये बता रहे हैं कि अगर हमारे समक्ष सदगुरु आ जाए तो महान गुरु भी हमारे समक्ष हो, प्रमाणिक होंगे। अगर हम सदशिष्य नहीं है और वो ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है, तो सदगुरु के सानिध्य में होने पर भी हम अपना खुद का बना और हम लेना नहीं चाहेंगे। So Lord Krishna in 10th canto, 84th chapter, the sages teaching at Kurukshetra, Lord Krishna is glorifying the magnanimity of the sages. So how Lord Krishna is saying that by seeing you all, my life is become successful. I am perfect. So he is glorifying. Krishna is saying that even the worship of deities and worship of Ganges, it takes long time to purify. But just simply by seeing you and associating with you for a few moments, then our life will be successful. In this way, glorifying the importance of the association of the saintly persons. भगवान श्री कृष्ण
फिर द्वारा सोल्यूशन में आते हैं इसमें स्नान करने के लिए फिर द्वारवासी के साथ में तो उस समय सभी ऋषि मुनि वहां पर जैसे वो आकर पूजे करते हैं प्रणाम करते हैं कि आपके दर्शन मात्र से हम सब कुछ हो जाते हैं। यहाँ तक कि पवित्र नदियों में जा करके या विग्रह की सेवा बहुत लंबे समय की सेवा के पश्चात हम शुद्धि हो पाती है। लेकिन आप जैसे जो महान आत्मा है महात्मा उनके केवल दर्शन मात्र से हम So we should understand, like what we have to do and what we have not to do. So from where we will understand that it is said in the Shastra how one should act and how one should not act. In Bhagavad Gita, the 16th chapter, the divine and demonic natures, very wonderful chapter we have to read again and again. Whenever I read this, the qualities of demonic, my qualities are all there. So then only I understand that we think that we are great and we are devotees, all these things. When the qualities of the demand, we can see that one, how that qualities, it is exactly like us. So in which is slogan, Prabhu, that one? 23 and 24. Here, this is Shastra, Prabhuji, but the other, then, I'm earning so much. 3, 4. See, there is a saying that, the devotees are carrying the Lord always in their heart. Wherever they are going, they are making that place is the place of pilgrimage. Prabhuji is carrying Bhagavad Gita and Bhagavatam and all the Shastras in his heart. And immediately, I'm searching in the book in my hand. I'm searching which one and which one. I couldn't able to see. But this is the initially I told that it is our great fortune we are associating with this devotee. We should not imitate them. We should try to follow them. Hare Krishna. So, I just want to read that one because this is very... Prabhuji? Yes, Prabhu. Yeah. Okay, this point we will discuss because time is, we have other programs. You can read in 16. So, Prabhupada is explaining that one very nicely, we are all here. Why we are all here in Kanaya Desh? So, Kanaya Desh, there is a satsang is going on very nicely. And under the leaders of the two brothers, we will all go there and we will get Krishna consciousness. Is this our intention to come to Kuwait? We all come here. What? Earn money. So it is not wrong to earn money, but this mentality. See, today I have, like this much money. Tomorrow I will earn this much money. And then, I will defeat my brother. He is having so much and so much. I will exceed him. Then in this way, I will become the top among in my family. Subconsciously, it is there. So, thank you, Prabhuji. Thank you. So, in this way, it is a demonic quality. Krishna says, we will see, the demonic, I am reading from the purport of Srila Prabhupada. The demonic person thinks, so much wealth do I have today, and I will gain more according to my schemes. So much is mine now, and it will increase in the future more and more. He is my enemy, and I have killed him, and my other enemies will also be killed. The Lord of everything, I am the enjoyer, I am perfect, powerful, and happy. I am the richest man surrounded by aristocratic relatives. There is none so powerful and happy as I am. I shall perform sacrifices, I shall give some charity, and thus I shall rejoice. In this way, such persons are deluded by ignorance. This is Krishna himself saying that. It's not the purport, it is the text. So, Krishna himself is saying, we may be not killing our enemies physically, but our mentality is that to defeat them, to kill them. This is the demonic mentality. So what is the divine mentality? So divine mentality is to simply surrender to Krishna, and whatever Krishna is providing,
I will take and I will utilize it for Krishna's service. This is the divine mentality. तो ये 16वें अध्याय में बताया गया 13वें श्लोक में इस प्रकार से जो आश्रय गुण है वो करेंगे हम लोग पढ़ते हैं लगता है कि हम लोग की ये अवस्था बताया गया कि वो सोचते हैं कि आज मेरे पास इतना धन है और मैं इसको सब प्लान किया हूँ जमा किया हूँ वृद्धि किया हूँ शेयर डाला कल इतना हो जाएगा ये सोचने वाले आश्रय लोग हैं और सब व्यवस्था मैंने कर ली है जितने मेरे पीछा करने वाले हैं उनमें हो जाएगा मर जाएंगे सब और मैं अकेले भूख करने वाला हूँ उन्हें कुछ होगा नहीं स्वर्ग नहीं करेगा तो इस प्रकार की जो चेतना रखने वाले हैं भगवान कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं पूर्ण रूप से तमो हो रही है और आसुरी इसके विपरीत में जो भक्त होते हैं वो भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं वो अपनी योजना को निर्भर नहीं रहते अपना कार्य करेंगे लेकिन अंततः उनको पता है कि जो कुछ होगा हम करता नहीं है भगवान के द्वारा करवाते हैं और पूर्ण से भगवान की योजना बनेगा तो यहाँ पर इस प्रकार की चेतना रखो हम सब जो पढ़ते श्लोक लगता है कि हम लोग प्रवृत्ति कोई आवश्यक Right. So with this, one last thing, I will finish this one. So what lesson we are learning from Mahabharata? Life lessons. We'll take, what from, different, we have so many lessons we can take from Mahabharata. So what lessons, especially what lessons we can learn from, to narrow down the question, what lessons we can learn from दुर्योधन? तो हम लोग क्या समझ सकते हैं दुर्योधन के इस व्यवहार से जो हम देखते हैं लोग वहां पे बताया गया कि हमें क्या शिक्षा मिलती है Anybody? प्रश्न पूछ रहे हैं उत्तर देना चाहेंगे अपने से बड़ों का आदर नहीं करना चाहिए अपने से बड़ों का आदर नहीं करना चाहिए we should not disrespect we should not disrespect our elderly person Yes, very nice, very nice. So very good. We should not disrespect our elderly person. So one lesson, I'm just thinking this way, this aspect. Duryodhan is the princess of the whole world. Duryodhan is the princess of his world. His brother, Dhritarashtra, is a saintly person. No, still, Yudhishthira Maharaj. Yudhishthira Maharaj is a saintly person, and Shastra says that still no enemies for Maharaja Yudhishthira. He's having that high quality brother. If he do not have this pride, he will be live long like anything. He will be glorified. So Arjuna is glorified, Bhima is glorified, Nagula is glorified, Sahadeva is glorified. Duryodhana, everybody, when we say the name Duryodhana, then everyone's face will shrink. They don't like him. There are so many names of Arjuna, Sahadeva, Nagul, Yudhishthira. Very rare to see Duryodhana's name. Why? Because of his ignorance, because of his enviousness. The Prabhupada used to say that this one word, we cannot dovetail this one quality, enviness, in the service of the Lord. So otherwise, even if Duryodhana asks his brother Yudhishthira, Maharaj Yudhishthira, brother, I rule this kingdom. Okay, take it. Yudhishthira is, from the beginning, he will give everything. Everything is giving. But because of this enviness, everything is ruined out. Krishna will tolerate this enviness. So this enviness is not the quality of Duryodhana. It's because we are all envious. Sorry to say that many wonderful devotees are there, but still, because we are envied about Krishna, we are here. Not like acharyas because they are coming here and teaching us, but most of us all envy towards Krishna. Because of that we are here and suffering in this material world, and Krishna is anxious to
all of us to get back to his abode. So every day, we should all aspire to take few more extra steps than the previous day. Then definitely within this lifetime, within this time, we will take is a wrong word. Krishna's shelter at his lotus feet is awarded. This is for guarantee. So every day before going to the sleep, we should think whether I did little extra, few more things extra than the previous day towards Krishna conscious activity. In this way, we pray, we try, then definitely all of us, we can go back to Krishna within this lifetime. Hare Krishna. Hare Krishna. तो कह रहे हैं कि यहाँ पर यही गुण है का वो एक मनुष्य सोच की द्वेष। देखिए उनके भाई महाराष्ट्र में अजात शत्रु सब उनके नाम प्रेम करते थे, उन्होंने उनसे द्वेष किया और द्वेष की वजह से उनके सारे दैवी गुण समाप्त हो। ये द्वेष का लिए कोई स्थान नहीं है, हृदय में द्वेष आ जाता है। भगवान अर्जुन को ज्ञान बोलते हैं कि अनसूय हो, हमारे हृदय में किसी द्वेष नहीं है, यही कारण है कि बुरे ज्ञान है। इस हृदय में द्वेष का प्रवेश होता है, वहां पर भगवत चेतना भगवत ज्ञान और इसी कारण से जो होती है तो द्वेष की वजह से तो देखिए सारे भाई जो हमारे छोटे भाई अर्जुन कीर नकुल सहदेव सब देव स्नेह किया प्रेम किया सबका नाम तो उनका गुणगान कर रहे हैं कि दुर्योधन का नाम लेने से ही जगत चला हो जाता है। कोई अपने बच्चे का नाम नहीं लेना चाहता क्यों? इस द्वेष की वजह से। तो मुझे कह रहे हैं कि हम सबको अगर जो आगे बैठा है तो लिखना पड़ेगा वैसे हमारे मन में कभी द्वेष कभी भी भगवान की सेवा में द्वेष जो है इस बात बताएगा भागवत में कि ये इस व्यक्ति की इच्छा करने वाले उनके अंदर ही द्वेष है। जब तक इंद्रिय भोग करने की इच्छा है तब तक मन से द्वेष नहीं है, भागवत बताएगा। इसलिए बहुत हमें सतर्क होना चाहिए कि भगवान को कोई भी ज्ञान आएंगे जाएंगे जाते रहेंगे प्रवेश अंदर जाके वो सही हमारे प्रवेश मिलना नहीं होगा। साथ ही साथ में मेरी बताया कि हम लोग रोज ये भगवान की भक्ति का जो विषय है कुछ न कुछ इसमें पर हमें आगे बढ़ना है, उस पर आगे बढ़ना जहां पर है वहीं पर नहीं है। लेकिन भौतिक जीवन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो 50 से नहीं बनता 60 और अपने जॉब पर वहां पर हम किसी को नहीं करते, आगे बढ़ना चाहते उसी प्रकार से आध्यात्मिक नहीं करते, आगे बढ़ रहे हैं। जब वो और करने का प्रयास और अधिक करने का प्रयास और अपनी चेतना को शुद्ध करने का प्रयास कभी करने की रोज रात्रि में हम सूर्य के बारे में देखें और ये संकल्प करने का मैं कुछ और विशेष करने का प्रयास करूँ, कुछ चाहते थोड़ा सा ही इस प्रकार से हमारी चेतना जब होगी देश को हटा करके और भगवान प्रेम से आगे बढ़ाना तो इसी जीवन में हम लोग भगवत धाम जाएंगे, अपने आप को दिखाएंगे और भगवान को आवश्यक। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज की हमारे पास समय कम है और बहुत समय समय से वहां पर पहुंचना है तो आज हम लोग